Hello friends, my name is Ish and I'm going to be your friend to introduce you to the CPA course. हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे आप अमेरिकन CPA जो है वो कर सकते हैं. So first of all, let me give you a brief of what is a CPA. CPA stands for Certified Public Accountant, and the important parameters are that various countries, they have the qualification of CPA. So when you say a CPA, it is not necessary that कि वो CPA सिर्फ अमेरिका का हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी CPA है, न्यूजीलैंड में भी CPA है, कनाडा में भी CPA है. So each country has various requirements of a CPA. Plus अभी जो हम बात कर रहे हैं US के CPA की, उसमें भी जो CPA है वो वेरियस स्टेट्स का है. सो इट इज नॉट दैट इजी कि जैसे इंडिया में अगर आप CA करते हो तो यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया, बट इट इज नॉट लाइक इन यूएस में इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एफिलिएटेड विद द बोर्ड. सो फॉर एग्जांपल आई डिड माय CPA फ्रॉम कोलोराडो, सो आई एम eligible to practice in Colorado or work in Colorado because my license is given by the state of Colorado. I cannot straight away go to New York or go to Washington to do the work. If I have plans to go to New York or Washington, then I have to fulfill those state requirements. So हर एक state की अलग requirements हैं, हर एक state के अलग hours होते हैं जो कि आपको maintain करने पड़ते हैं, which is called as the CEP hours. Plus, state is the authorized agency to check whether you are fulfilling the credentials or not. So first of all, it is state specific. Secondly, it is specific to each person because हर एक किसी की अलग डिग्री है. किसी के पास आप फ्रेंड्स में से किसी के पास CA हो सकता है, किसी के पास सिंपल ग्रेजुएशन हो सकता है, किसी के पास M.Com हो सकता है, किसी के पास कोई और डिग्री हो सकती है, कैन बी कॉस्ट अकाउंटेंट, कैन बी कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो. सो एवरी स्टेट विल हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. यू मे मीट some of the state's criteria and you may not meet some of the state's criteria, and that is where your agencies like Takshila here or Orbit institutes, they can help you to get those validations done. So that is point number one which you have to be very careful about. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, then I will keep on guiding you in terms of what all things are required in terms of understanding and how you should proceed for the next part. First of all, CPA is basically, we say it's a gateway to the golden global opportunities. Reason being, US being a very strong country, उसकी जो डिग्री है, it is like the person who can stamp any financial statements. Any company in US, उसकी जो financial statements हैं, उसका जो certification है, is done by a CPA. So it's very powerful person. At the same time, there are liabilities associated. क्योंकि अगर आपने गलत balance sheet पे sign कर दिया, then probably you will have to face the repercussions as well. Secondly, globally, some of the countries' degrees may not be valid in various countries. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर से CPA करते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया से CPA करते हैं, योर डिग्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अदर कंट्रीज एज गुड एज द डिग्री फ्रॉम द US. सो इफ यू डू अ डिग्री फ्रॉम US, आपकी जो वैल्यू है इज एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में वेरियस कंपनीज लाइक डिलॉयट है, KPMGs हैं, E&Y है, वर्ल्ड बैंक है, all big MNCs हैं, Coca-Cola है, all big organizations, they definitely give a more weightage because most of their headquarters are in US or big other countries. तो उनकी जो consolidation होता है वो उसके लिए they prefer somebody who has a CPA knowledge. So it's a gateway for the person to move into anywhere in the world because that opens the door for him for the global opportunities. Moving on,
It's basically, as I mentioned earlier, ये एक डिग्री का नाम है CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. जैसे इंडिया में वी कॉल इट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और a कॉस्ट अकाउंटेंट, वहां पर it is a public accountant, which means the accountability is towards the public. It is the top accounting credentials because इसके ऊपर कोई नहीं है. A person who stamps, person who authorizes, person who is responsible for the accuracy and authenticity of the financial statements, इसके ऊपर कोई और नहीं है. Uh, like in India, we have three major degrees: the CA, the CS, and the cost management. And there is a Institute of Chartered Accountants, or Institute of Cost Accountants, or Institute of Company Secretaries. So in US for CPA, it is governed by the AICPA, which is basically similar to what we have, the Institute of Chartered Accountants. Is issued by one of the 55 state boards. So as I mentioned earlier that each state, like for example in my case, I have done my degree from Colorado state. So my state of Colorado, जहाँ पर उनका CPA institute है, they are going to authorize me that I am going to be valid person who holds a CPA license from state of Colorado. So ultimately, it is not just one body. AICPA is not the body which is going to certify my degree or give that degree to me. It is a state board which is not here in India. So state board will authorize that whether I am a right person for holding that degree or not. And it actually says it is the topmost degree of India, like similar to what we have in India. Uh, so how to do it? So practically there are just 4 papers, just 4. Like in CA, you have to give about 16, 17 papers. Same is with the CMA and same is with the company secretary. एवरेज जो इंडिया में जो क्वालिफिकेशन है उसमें 16-17 पेपर देने होते हैं. द बेस्ट पार्ट इज हेयर इट इज जस्ट 4 पेपर्स, उसके अलावा कुछ नहीं है. So I have seen various people. I have couple of relatives of mine also who could not clear the CA after so many attempts, but they were able to do this in 3 or 4 attempts. So up now they are US credentials qualified persons. So that's where the importance of this degree lies. यहाँ पर 4 papers हैं, which is one is financial accounting. Much different from the Indian accounting. It is not the Indian accounting, but conceptually they are the same. So accounting के जो concepts हैं, they are not different. But yes, they are more towards the US. कुछ उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा उनका बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स अलग हैं. But as you know, in India, most of the organizations are moving towards IFRS. So US GAAP is also moving towards the IFRS. तो majorly you will see बहुत सारे concepts जो हैं वो IFRS aligned हैं, but they are not purely IFRS, but they are aligned towards IFRS. So first of them is the financial accounting, जिसमें हम financials की बात करते हैं, accounting की बात करते हैं, balance sheet की बात करते हैं. It is a tough paper. It is not an easy paper. The second paper is of course the audit, जिसमें हम बात करते हैं accounting के audit की, auditing reports की, auditing के formats की, auditors की responsibilities की, auditor की auditing standards की, वो हमारे लिए important है. उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस की, जिसमें हम बिजनेस के एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं, बिजनेस के कंसेप्ट्स की बात करते हैं. इट इज मोर लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा वो भी इसमें है. एंड द फोर्थ वन इज द रेगुलेशन, जिसमें हम टैक्सेस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, कंट्रोल्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं. Typically, each paper has 4 hours examination, but it might change. So some of the papers might be of 3.5 hours also. Like when I gave the exam,
I think business was of 3.5 hours, if I'm not mistaken. So generally you will see 4 hours, 4 hours, 4 hours each, but sometimes the paper may not be exactly of 4 hours, but they will tell you in advance कि 4 hours का है, 3, and they keep on changing. एग्जाम देने के लिए इट इज नॉट लाइक इंडिया की डेट अनाउंस हो गई है आपने उस डेट पे जाना है. एग्जाम देने के लिए यू कैन चूज योर ओन डेट्स. सो देयर आर पैरामेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स, प्रोमेट्रिक का एक उनके एक अलग से टेस्ट सेंटर्स होते हैं. आपके पास जैसे ही इंटीमेशन आता है आप इमीडिएटली प्रोमेट्रिक में अपनी डेट्स जो है टाइम स्लॉट्स भी आप बुक कर सकते हैं, and on those time slots you can go there and appear for your exams. My experience has been, I have seen couple of friends जो बड़ी multinational companies में they have been working, and in 1 month or 40 days they went over there, 10 days each, 4 paper they cleared and all papers in one go. I have seen them. कोई इंडिया से पढ़ाई करके नहीं गए, वहीं पर 10 दिन की पढ़ाई करी, एक पेपर बुक किया, अगली बारी पढ़ाई बुक करी एंड सो ऑन. बट देन इट इज अ रिस्की सिचुएशन. समटाइम्स आप प्लान करके जाते हो कि मैं वहीं ब्लॉक कर लूंगा और डेट्स नहीं मिलती हैं क्योंकि वो कई बाकी लोगों ने भी ब्लॉक कर लिया होता है. सो plan in advance so that you are able to get your dates the day you want. Thirdly, now the centers are available in Dubai also. So जब हमने किया था तो it was always in US, which was 16 hours flight from here. But now Dubai 2.5-3 घंटे में भी people are reaching there and it becomes very easy to give those papers in Dubai as well. Credibility है, benefits हैं, एडिशनल अमाउंट्स हैं, प्लस एक स्टेबिलिटी की बात कर पाते हैं. So there are some bodies which confirm that एक एवरेज CPA जो है about $7,20,000 जो है वो बना पाता है over the course of their career, which is not immediate. ये नहीं है कि CPA करते ही आपको इतनी हाई सैलरी मिलती है. So on an average is what a CPA with 3 to 4 years of experience can actually make. अगर आपके पास license आता है, license is not once you qualify you get a license. It is not that easy. So you have, first of all, you get your course pass done, and after that you have to apply to the state, and basis that state credentials they will allow you to license. License means you can practice in anywhere in the US. So that is how the US situation and the CPA works. This is the Robert Half salary guide says that you have an advantage because if you are a CPA, definitely you are much better off. You have a professional degree with you. Okay, you can go through various surveys which confirms. As far as India is concerned, there are huge number of companies. Generally जो companies जो हम बात करते हैं वो generally वो companies हैं जो कि US के साथ कहीं ना कहीं पर linked है. So as you can see here, you have Cognizant, you have EY, you have KPMG, Citigroup, McKinsey, Wipro, Accenture, Deloitte, Genpact, and so on. I was in Genpact as well earlier, and our company used to hire a lot of CPAs at that point of time. The 3 E's which are required, which are mandatory to be a part of that qualification. First of all, you need to be eligible to appear. Generally in US, like in India, we have 12 plus 3. So 12 years is the up to 12th and 3 years for graduation. US में it is 12 plus 4. So anybody who is a graduate will not be eligible to start the CPA work because they will need 3 plus 1, 4. So they need at least 12 plus 4, 16 years of prior educational experience is a must. So अगर आप CA कर लेते हो तो उसके बाद some states do allow you, but अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको एक और M.Com या एक मास्टर्स डिग्री या 1 साल का एक डिप्लोमा टाइप करना पड़ता है.
so that you are eligible to sit in the CPA exams. Okay, so you have certain credits. जैसे इंडिया में I'm sure आज के जो बच्चे हैं they understand the importance of credits. Each exam, each subject has certain credits available, especially in the master's degree. Similarly, you have to earn those credits to make sure that you are eligible for these programs. And most states require 150 semester hours. US में अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है तो it is sufficient, but इंडिया में अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है so it is not that sufficient. उसमें जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. वन इज मल्टीपल चॉइस, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक चूज करना है. उसमें कुछ एक टेस्ट लिस्ट होंगी जिसमें आपको एक क्वेश्चन, एक सिचुएशन दी होगी, आपको उसके बेस पे उसको एनालाइज करके उसके आंसर्स में से उसको टिक करना है. और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, एग्जांपल जैसे ऑडिटिंग में वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जी आपको एक ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप ड्राफ्ट करोगे, उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को आप यूज़ करोगे. या वो दे माइट गिव यू अ सिचुएशन कि अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको एक ऐसी रिपोर्ट में आपको डिस्क्लेमर देना है या आपको एक क्वालिफिकेशन देनी है तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, हाउ विल यू डिराइव दैट. So there are 3 type of testlets. Basically, one is the multiple choice, we call it as MCQ. Then there are task based, जहाँ पर question specific होगा, and then there will be a big essay type of questions. Financial accounting and reporting की अगर हम बात करें तो मोटा-मोटा उनका जो drafting रहता है वो इस तरीके से रहता है कि and they will tell you that this subject जो हम teaching, जब हम course material की बात करते हैं, they will tell you कि क्या-क्या इस जो आप पढ़ रहे हो उसका वेटेज कितना है. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि वो कहता है कि सर मुझे फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर मुझे वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहा व्हिच इज पार्ट 3 हियर, देन आई शुड फोकस मोर ऑन द अदर पार्ट्स. एंड समटाइम्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया में वो पढ़ी नहीं होती है. So that might be time consuming, but if you don't have time, is it really worthwhile? So वो थोड़ा सा आपको balance करके चलना है, because ultimate objective is to pass. So time balance is very very important, and that is what it says: 15 MCQs, 1 task-based situations, and the most important part of all these exams is that passing grade is 75. I have seen couple of friends which have scored 74 also, and they have not been able to pass these exams. Almost same scenario ही रहता है auditing and attestation में भी, financial accounting में भी, और बाकी सब parameters में. So this is just a beginning of your starting structure. I hope you like this video, and we will be happy to assist you in your future programs. Thank you from Takshila.